अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पीटी में 90/90 स्कोर कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हम स्पीकिंग जोन की तरफ चलते हैं और फर्स्ट और लैपटॉप में languageacademy.com से आपने ख़ुद को रजिस्टर करना है और लॉगिन करके आपने प्रैक्टिस मटेरियल में आना है। और स्पीकिंग जोन हमारे पास 4 मॉड्यूल हैं पीटी में: स्पीकिंग जोन, राइटिंग जोन, रीडिंग जोन एंड लिसनिंग जोन। ठीक है, तो सबसे पहले विल गेट टू प्रैक्टिस ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. You will get all sort of questions and which comes in the PT starting PT exam, starting from speaking, writing zone, reading zone and listening zone. So you can also practice the mock exam in this app or app uni, or we can say alpha PTE app, which is exactly same structure in real PTE exam. So you need to do is learn 7 simple strategies. Just keep watching this video because I will give you demo exam in front of you and show the points I get and read aloud. Read aloud is most important part of speaking because it contains 33% of total marks and this I think is the easiest way to get marks for speaking. Now I will do read aloud test myself and show you how easily you can score marks. Vehicles have arrived with technology led by Tesla, and all of the world major car manufacturers are following along behind. Electric vehicles are now a common sight on the road of the most developed countries, yet the situation in less developed countries is rather than different. The only African country to have started the change to electric